Hello. Okay. So without wasting our time, let's start our fourth lecture. Today we are doing the electric potential that you can see on the screen. Today we will be talking about, we'll try to understand what is the electric potential. Then we will move to the potential difference and we'll try to understand what is the difference between potential and potential difference. Then we'll talk about the what are the units of electric potential or potential difference, all those definition, formula. We will derive this formula, how come we get V equals to W by Q. Everything we'll try to understand in this lecture. Okay. Now, starting with the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, उससे पहले लास्ट क्लास में कुछ सर्किट डायग्राम्स की बातें हो रही थी. ठीक है, रिमेंबर, सर्किट डायग्राम्स की बातें हो रही थी. मैं एक सर्किट डायग्राम देता हूँ. आई विल गिव यू अ सर्किट डायग्राम. यू हैव टू टेल मी इन दिस सर्किट डायग्राम, लेट्स से दिस इज वायर, दिस इज बैटरी, दिस इज ओके, बैटरी नहीं देता था. वेट वेट. ओके, ये दिस इज अ वायर. यहाँ पे लेट्स से एक स्विच लगा दिया. ठीक है, एंड लेट्स से द स्विच इज ओपन, क्लोज्ड. Switch is closed. Okay, and we connect a bulb here. Okay, see, the circuit is closed. Circuit is closed. Everything looks fine. But I'm asking, will the bulb glow? Will the bulb glow? For sure, you will answer that no, the bulb will not glow. Why it will not glow? Because you will say that, sir, battery is required. Battery or a cell is required, then only it will glow. So if I add a battery here, if I add a battery here, positive, negative, the bulb will start glowing. So now we will try to understand what is the function of this battery function, or what is the role of this battery in this circuit diagram. Okay, that we will try to understand in today's lecture. Okay, now I'll give you one example. Let's say, let's start with the discussion of in last class, in class 9th physics. There's a chapter work, power, and energy. Remember, work, power, and energy, and energy. There we learn about one type of energy that's called the potential energy. Potential energy. Okay, and from there, let me ask you a question. Let's say this is some height h. Okay, there is a ball kept here. Okay, you want to take this ball and keep it here at some height h. So in doing so, you require some energy. Moreover, I can say you have to do some work. Then only you can take this ball and keep it here on some height. Okay, so in that way, the ball acquires what? Potential. That potential is basically the gravitational potential. Gravitational potential. So ball acquires the gravitational potential. Okay. Now here I will be talking in the same way. Same way. Here we will be talking about the charges. Charges. Abhi, from charges, how can we relate the electric potential? How can we relate the electric potential? Okay. See, here, let's say, let's assume that any charge was there. Charge is denoted by a small q. Let's say any positive charge was there. Okay, and it is kept at infinity, any distance. Okay, from here I am taking this charge to some point A. So this much distance, infinity distance from here, I have to take this charge and keep it at this point. In doing so, I'll have to do some work. Okay, let's say I did 1 joule of work in doing so. Okay, if I am having two charges here, okay, then to bring two charges, I'll have to do 2 joule of work. Okay, to bring the three charges, I'll have to do more work. Okay, so electric potential is actually defined in that way. Okay, electric potential says that, acha, electric potential, if you are not much familiar with the electric potential, you must be familiar with the, you might be
listening, you might have listened to this word somewhere like voltage and all those things. So here I will tell you how the electric potential is related to the voltage. Okay, so now here, if you can see the amount of work, let's say this is the charge Q, and the amount of work which is spent in doing so, that is nothing but the electric potential. Electric potential. Clear? Electric potential. Acha, this amount of work is measured per unit charge. Okay, per unit charge, how much work, per unit charge, how much work I have to do. Okay, that is nothing but the electric potential. Okay, that is my electric potential. So what I said, electric potential is defined as nothing but the total work that I have done by per unit total charge. Okay, so that per unit charge, how much work I am doing, that is defined as the electric potential. In short, electric potential is denoted by V, and total work is denoted by W, and total charge is denoted by Q. So I got the formula V is equals to W by Q, where V is what? Electric potential, W is the total work done, and Q is the total charge. Okay, here okay. About the this is one more formula in this, I guess ये तीसरा फॉर्मूला है ना हमारा in this chapter. V is equals to W by Q. ठीक है. अच्छा, why is it required? Why the potential is required? Potential is required. इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे in your home the water tank, it is always kept on the highest level. Okay, the water tank is always kept on the highest level. What if you keep your tank on the ground and you want the water at your roof without using any electricity, any motor or something? Not possible, na? So you keep your tank on the highest level so that it is connected to the pipe and the water comes down automatically gravitational using the gravitational potential. Okay, so here you can relate it that the water flows from a region of higher potential to a lower potential. Okay, so in circuit diagram or electric circuit also something same phenomena is there. See, I'll show you. Here, when I connected the battery, I created a potential difference. अच्छा, potential difference क्या होता है? बात करते हैं अभी. I created a potential difference. Conventionally, ठीक है, लास्ट लेक्चर में आई गेस हमने बात करी थी कि करंट का डायरेक्शन जो होता है इट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके, पॉजिटिव एंड, इट इज टेकन एज द हाई पोटेंशियल. हाई पोटेंशियल कन्वेंशनली, मतलब सब लोग दिस इज जस्ट अज्यूम कि हाँ ऐसा होता है एंड एवरीवन इज फॉलोइंग इट. दैट्स कॉल्ड एज द कन्वेंशनल, एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एज द लो पोटेंशियल. लो पोटेंशियल. ठीक है, सो एज इन द केस ऑफ सी दिस इन द वाटर टैंक, ये वाटर टैंक के मामले में इट गोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक करंट में भी कुछ ऐसा ही होता है. ठीक है, बैटरी लगाने से आई क्रिएटेड द पोटेंशियल डिफरेंस. ये वाला पार्ट जो है हायर पोटेंशियल पे आ गया, ये लोअर पोटेंशियल पे, एंड हेंस द चार्जेस स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ठीक है, charges started moving from higher potential to lower potential. जब तक until and unless potential difference is not there, अगर नहीं है, so electric current will not flow. Electric current will not flow. So it is important for electric circuit to work, potential difference is needed. Okay, this one is clear, I guess. Okay, I hope it's clear. Okay, clear. So now, what is the SI unit? Let's talk first completely about the electric potential, then we'll go to the potential difference. What is the SI unit of electric potential?
SI unit, it is volt, denoted by letter V. अच्छा, it is actually, if you see the usual one, work is measured in joule, charge is measured in coulomb. So if somewhere it is written that joule per coulomb, that is also a SI unit. Don't get confused. It is just an honor of the scientist who invented it. तो उसके नाम पे उसका जो है यूनिट रख दिया गया, ठीक है. Although ये भी SI यूनिट ही है, there is no confusion in that. But we use the volt. SI यूनिट में we use the volt denoted by V. ठीक है, तो बात हो गई इसकी. If now when it is defined, now let's define the 1 volt. हाउ डू यू डिफाइन द 1 वोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है. ओके, 1 वोल्ट हो गया, 1 एम्पियर हो गया, डिफाइन 1 वोल्ट. ओके, और 1 एम्पियर, हाउ डू यू डिफाइन 1 वोल्ट? सी, वोल्ट, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, अभी हमने करा. सो इन प्लेस ऑफ W यहाँ पे 1 पुट कर दो, इसको भी 1 पुट कर दो, ठीक है. If I'm putting 1 and 1 both to work and energy, work and charge, I will get this one also as 1. ठीक है. So what I am saying in words, how I can write, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to that point, then the potential at that point is said to be 1 वोल्ट. ठीक है, ये हो गए, यहां तक की बातें सारी समझ में आ गई, ये क्लियर है. अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, इट इज अ स्केलर. I guess there's a lot of stuff on this board, that's why it is lagging. I have to remove it. It is a scalar quantity, like it is measured in 1 volt, 2 volt, 5 volt, 3.6 volt, any. It need not be just the integral value, any value it can acquire. Okay, so it is a scalar quantity. Till here it is clear. Okay, so I'm having a picture. Let me show you. See, like this one. The positive terminal, as you can see, the positive terminal is at higher potential and the negative one is at lower potential. That's why the electrons flow from region of electric current flow from region of higher potential to lower potential. Clear? ये clear हुआ? The direction of electric current यहाँ से भी एक और clear हो गया. Now let's talk about the last one, the potential difference. एक काम करते हैं, ये सारा चीज डिलीट कर देते हैं. It is just lagging a lot. Okay. I hope it works smooth now. Okay. Now we'll talk about the potential difference. अच्छा, इन द लास्ट सेक्शन अभी जो हम बात कर रहे थे कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वी एक्चुअली कैन नॉट डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोन. वी कैन ओनली टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे कि लास्ट सेक्शन में जो हमने बात करी कि ये एक पॉइंट है और यहाँ इन्फिनिटी से हम एक कोई चार्ज प्लस क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, वी हैव टू डू सम वर्क. तो ये एक पॉइंट है, ये एक दूसरा पॉइंट है. तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. मान लेते हैं यहाँ पे उसका पोटेंशियल 0 था, यहाँ के उसका कुछ पोटेंशियल v हो गया. तो वी आर एक्चुअली जस्ट सीइंग द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा कुछ होता ही नहीं. वी जस्ट टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, सो दैट आई विल टॉक कि जैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, इसमें बल्ब लगा दिया,
It is glowing. Let's say this is a switch which is connected. This is a battery. Okay. It is flowing from a region of higher potential to lower potential. It is glowing. Now, let's say I will say the question, or I will say you the situation. This is one point. This is another point. What is the potential difference? Potential difference between these points. Let's say this point A and this point B. Okay, how do we define it? How do we define it? Potential different is, just a different name of voltage. It is defined as, it is defined as the amount of work या फिर required work required to move a unit charge defined to move a unit charge between 2 points. Between 2 points, कोई भी 2 points हो सकते हैं between 2 points. क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे भी हम 1 volt डिफाइन कर सकते हैं. 1 volt, it is here 1 volt is defined as when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from point, let's say this is point A, this is point B, so from point A to point B या फिर point B से point A, वो that's not a big deal. ठीक है. Formula also remains the same. जैसे कि मान लो V at point B minus V at point A is defined as the total work done in moving from point A to point B by total charge. Total charge. That is my electric potential difference. And for sure, it is also a scalar quantity and it is also measured in volt. It is also measured in volt only. क्लियर है? सो यहाँ पे V of B क्या बता रहा है? V of B shows us the electric potential at point A and V of B is here, no? Electric potential at point B and V of A shows the electric potential at point A. क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? तो अभी हमने पूरे लेक्चर में क्या देखा? एक फॉर्मूला, जो नया फॉर्मूला निकल के आ रहा है, विच इज V इक्वल्स टू W बाई Q. ठीक है, ये एक बस फॉर्मूला याद रखना है एंड द थिंग्स विल बी डन. अच्छा, वन मोर थिंग. देखो फिर से ये Q यहाँ पे रिलेट कर रहा है. रिमेंबर द लास्ट फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू NE पहला फॉर्मूला था, I इज इक्वल्स टू Q बाई T दूसरा फॉर्मूला था, और यहाँ पे आ रहा है V इक्वल्स टू W बाई Q. हर एक फॉर्मूले में Q आ रहा है. ठीक है, द Q टोटल चार्ज इज देयर. सो क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू एनी ऑफ देम. कहीं से भी रिलेट कर सकता है क्वेश्चन. यहाँ से पूछ के तुम्हें आई पूछ सकता है, या फिर यहाँ से रिलेट करके दे कैन आस्क यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी पूछा जा सकता है. ठीक है, सो ये क्लियर हुआ? टेल मी इफ दिस इज क्लियर, वी कैन मूव. ओके, वी कैन मूव फर्दर. Okay, done. So let's do some problem and then we wind it up. I hope the session was not much longer today. Okay, coming to the first question, मैं directly question copy कर लेता हूँ so that we can save the time. Okay, I hope the question is visible. Now you try it. First you try it, then we'll see. I'll solve it for you for sure, but please try it once. Okay, pause करने का, try करने का. ठीक है, हो गया? हो गया? अगर हो गया है तो I'll give you the answer of this one. The answer will come out to be 24 joule. You check it. अगर आपका सही है, नहीं. अगर नहीं है तो see the solution. अगर आपका सही है तो you can just move to the skip to the next question. See what all things are given. What all things are given? First one, charge is given as 2 coulomb. ठीक है, and potential difference means V is given as 12 volt. Work, it is asking what is the work done, how much is work done. So we know that V is equals to W by Q. Now what is the work? I don't know. What is the V? It is given, which is 12 equals to W, and charge is given as 2. So from here, acha, everything is given in SI units, so no problem in that, no need to change anything. Okay, so from here work I got as 12 into 2, which is 24, and work is measured in joule, so my answer is 24 joule. अच्छा, एक और चीज मैं बताते चलूं. इस वाले केस में भी ऐसे जो है ना, मिली वोल्ट, ओके, मेगा वोल्ट,
ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। बस वो कन्वेंशन, वो चेंज, यूनिट कन्वर्जन जो है याद होना चाहिए कि अगर मिली में जा रहा है, ठीक है, तो 10⁻³ होगा। मेगा अगर आ रहा है तो 10⁻6 होगा। ओके। माइक्रो अगर है तो 10⁻⁻6 में जाएगा। ठीक है। किलो अगर है तो ये 10⁻³ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना एक ध्यान में रखने का। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। क्लियर है? देखो फिर से मैं बता देता हूँ कि हमने क्या किया कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ विच इज 12 वोल्ट, चार्ज दिया हुआ विच इज 2 कूलम, वर्क में निकालना है, हमने फॉर्मूला डाला V इक्वल्स टू W/Q। W हमें नहीं दिया हुआ है, V हमारे पास दिया हुआ चार्ज, V हमारे पास दिया हुआ है, एंड total charge is also given. So from there I can clearly find out W equals to V into Q, which is 12 into 2 which is 24 जूल। आंसर आ गया। क्लियर है? इजी, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, now let us proceed to question number second. Okay, question number second. Okay, now नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन, फिर से वर्क डन फाइंड करना है मूविंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स मेंटेन एट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, वर्क डन फाइंड करना, वर्क डन फाइंड करना। ओके, फाइंड करो, ट्राई करो। मैं आंसर दे देता हूँ। आंसर विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल। Yeah, -17, this is the answer. Try करो। कर लिया, कर लिया, कर लिया। मैं स्टार्ट करूँ? Okay, let's do it. Solution. So what all things are given? First of all, so number of electron is given, which is 1. Okay, अच्छा, what is the charge on one electron? Which is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. ठीक है। अच्छा, potential, or else in short I can say electric potential V is given as 100 volt. Acha, everything is given in the SI unit, so no problem in that. We can proceed clearly. So apply the formula V equals to W by Q. Now V is given as 100, W I don't know, charge I know is 1.6 into 10 to the power minus 19. So I got W is equals to what? 100 into 1.6 into 10 to the power minus 19. So here this will go here, two zeros will be gone. 100 yeah, so it will be 1.6 into 10 to the power minus 17 joule of work. ठीक है, क्लियर? देखो फिर से मैं बता देता हूँ क्या किया हमने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। V का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 100 वोल्ट। नाउ वी नो दैट V is equals to W by Q. Now V is 100, W is this one, and Q is 1.6 into 10 to the power minus 19. Now W is equals to 100 into 1.6 into 10 to the power minus 19. आंसर आ गया 1.6 into 10 to the power minus 17 जूल। ठीक है, एक और वन मोर लास्ट क्वेश्चन। वैसे करने को तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, बट आप प्रैक्टिस करो। आपकी बुक में जो भी है एनसीईआरटी आप लगा सकते हो, या फिर कोई दूसरा बुक अगर आप रेफर करें, यू कैन जस्ट डू क्वेश्चंस जितना कॉन्सेप्ट कराया है एंड जो भी फॉर्मूला है उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अभी देख लो, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इफ 30 जूल। यहाँ पे वर्क दे दिया गया है इस वक्त। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वर्क को और पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट कर सके, लेकिन हम एक दो फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो। आंसर जो है आपका मैं बता देता हूँ, 3.12 इंटू 10⁻19 इतना इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, ट्राई कर लो। 1 2 3 4 5 पॉज कर लो, ट्राई कर लो। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, बिना ट्राई करे मत करो। ठीक है, इफ यू जस्ट सी द सॉल्यूशन वीडियो डायरेक्टली यू विल नेवर गेट द कॉन्फिडेंस। नहीं मिलेगा कॉन्फिडेंस, इसलिए आई एम सेइंग यू हमेशा क्वेश्चन जो है ट्राई करो, देन ओनली कम हियर। ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट। सो अगेन स्टार्ट विद द गिवन, व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन। वी हैव V is given as 6 volt, SI यूनिट में है, no problem. Work is given as 30 joule. From here can I find Q?
Q हम फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट V इज इक्वल टू W बाई Q, तो Q यहाँ से क्या आ जाएगा, W बाई V। ठीक है। सो नाउ W आई एम गिवन विथ 30 जूल एंड V इज 6, सो दिस इज 30, दिस वन इज 6, सो आई गॉट एज 5 कूलम। सो Q हमारा कितना आ गया, 5 कूलम। ये हो गया क्लियर। नाउ वी नो दैट, वी नो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद है, Q इज इक्वल टू एन ई। ओके। अच्छा, Q हमारे पास मिल गया 5, n का वैल्यू मेरे को फाइंड करना, और E का वैल्यू वी नो ऑलरेडी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है। इधर भी कूलम है, कूलम इधर भी कूलम है, कूलम कूलम कट जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू फैन। क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे कूलम है, यहाँ पे कूलम है, तो यहाँ से n का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, इट विल बी 5 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम गया, तो दैट्स व्हाई आई टेल यू कि जब भी ऐसा यूनिट में हम वर्क कर रहे हैं तो हमें यूनिट्स को, वी जस्ट नीड नॉट बॉदर अबाउट द यूनिट्स। अभी देखो ये कितना आ गया, 5 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये आ गया। So I can write it as 5 by 1.6 into 10 to the power plus 19. इसको ऊपर ले जाए तो it will be 50 by 16 into 10 to the power minus 10 to the power 19 plus 19. This is 16. This is 16. So 16 3 ja 48 2 20 16 1 ja 60 4 40 16 2 ja 32. So 3.12 into 10 to the power 19 electrons. कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे टू क्रिएट द 6 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। सो ये था सारी चीजें, क्वेश्चन हमने कर लिए। आज के सेशन में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने वी स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, V इक्वल्स टू W बाई Q होता है, एंड देन वी मूव टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। वी डिफाइन द 1 वोल्ट एंड everything else, and we did some questions based upon it. Clear? Abhi, next session में based on it, we'll talk a little bit about the ammeter, voltmeter and galvanometer. ठीक है। अच्छा, उसकी बात हम शायद से, देखो, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड द वोल्ट मीटर। ठीक है। voltmeter, it is an electrical device, it is an electrical device। वैसे मैं फॉर्मूला, डेफिनेशन एंड ऑल दोस थिंग, ये सारी चीजें दूंगा, डोंट वरी। डिवाइस, सारी चीजें पीडीएफ में होंगी। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर measure electric potential, या फिर better we say that the potential difference between 2 points in an electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, ये जो है ना, हमेशा इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी बस जान लो, कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आगे के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। रेजिस्टेंस जब हम पढ़ेंगे उस टाइम हम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, एमीटर की भी बात करेंगे, वोल्ट मीटर की भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड एक और होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मैं ऐसे ही बता देता हूँ, गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, गैल्वेनोमीटर वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक में आना चाहिए था। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, इट इज यूज्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इज वेरी लो। तो बहुत छोटे करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेट रिफ्लेक्ट करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके। एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। वेयर वी आर starting the very important one from the board's perspective, it is really important, that is the Ohm's law। ठीक है। Ohm's law की बात करेंगे, we'll try to derive it and we'll see the graphs related to the Ohm's law, and then we'll talk about resistance, what is the resistivity, all those things, what are the factors that
affect the resistance of a wire. Everything we'll try to see in the next video. So for now, let's wind it up. We'll meet again in the next video. Okay. Any doubt, any confusion is there, you can put it down in the comments. And yeah, if you are not sure, you can go back, see the video again. And okay, so let's wind it up. Thank you. Good luck.